Hello, good evening to all of you. Today we are going to revise the chapters of vector algebra as well as the matrices. First of all, we are starting with the chapter number 1, chapter number 2 as we have that vector algebra as well as we go through the chapter number 1 matrices. So all of you, this live session is for the डिफिकल्टी सॉल्यूशन सॉल्वेबल फॉर्म ओके तो आपको जो भी सॉल्यूशन जिस भी एग्जांपल का लेना है करवाना है यू कैन सेंड मी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग with the topic wise formulation. First of all, the vector algebra. Vector have a two type. Vector means what? First of all, the vector. What is mean by vector? Which physical quantity is described with the direction and value, right? That physical quantity is called vectors. So vectors having, for example, force, displacement, velocity, etc. uh, उसका छोटा भाई है scalar, okay, which physical quantity described by only the value, okay, that is called scalar. Scalar, for the example, weight, mass, temperature, okay. This way we are starting with the this way we are starting with the vector algebra. So vector is the physical quantity and algebra means the calculation of the vectors. So first of all, the basic vectors are described in a two way, which is called two dimension, and next one is called three dimension. So vector quantity is described by the x bar, small alphabets, x hat, or you can say x arrow. Okay. For two dimension, we can say x bar having the formulation x1 comma x2, where x1 is from x-axis and x2 is from y-axis. Okay. Similarly, for the three dimension, you can describe it as a x1, x2, x3. X1 is from x-axis, y2 is from x2 is from y-axis, and x3 is from z-axis. Okay, it's in coordinate form. Okay, and both the form is from the axis. Okay, also vector can be described as an unit form, which is helping with which taking help the I, J, K. Okay, I, J, and K are the unit form, or you can say unit vector, which is based of the vector algebra. It's look like x1 I plus x2 J. This formulation is in IJ form. And if you go for the three dimension, it is called x1 I bar plus x2 J bar plus x3 K bar, where I and J are unit vector form. Here also I, J, and K are unit vector form. Okay. Then uh, we have the basic formulation that is called modulus
of vector. Suppose x bar is in two dimension x1 and x2, then mod of x bar is modulus of x1 square plus x2 square. Similarly, it is for the three dimension. If it is for three dimension, then it is called x1 square plus x2 square plus x3 square. That is called, we have to find out the value that is called the modulus of vector. For example, x bar equals to 1 minus 2, then mod of x bar equals to 1 square plus minus 2 whole square, which is 1 square plus 4. 1 square is 1, 4 square is 2 square. Okay. So 1 square plus 2 square is 4, which is 1 plus 4, which is under root 5. So this is called the modulus. Now we are going for the solve the addition and subtraction of vector. Addition and subtraction of vector. So if x bar equals to x1 comma x2 and y bar, which is different vector y1 y2. Okay, I am giving the example for the two dimension. It is same as for the three dimension. Then if you go for the x bar plus y bar, then x1 comma x2 plus y1 comma y2. So x-axis, x1 and y1 both are from x-axis and x2 and y2 from y-axis. So x1 plus y1 comma x2 plus y2. Okay. So for example, x bar equals to 1 4, y bar equals to 3 5. So if you go x bar plus y bar, then 1 comma 4 plus 3 comma 5. So 1 plus 3 comma 4 plus 5. It is 4 and 4 plus 5 it is 9. It's same we can do for the three dimension. Okay. Then for the subtraction, it's the same. We have to just change the sign. So it is x1 minus y1 comma x2 minus y2. Okay. Suppose we are taking the example, this same for the subtraction. So 1 minus 4, sorry, 1 minus 3, 4 minus 5. So it is minus 2 minus 1. This is your solution. Okay. This is the vector addition subtraction. Okay. Now we can say scalar multiplication. Means if you have x bar, x1, x2, x3, I am taking here three dimension and they say k into x bar so that k x1, k x2 and k x3 likewise. For example, x bar equals to 1, 3 minus 2. Find 2x bar. So 2x bar means 2 into 1, 3 minus 2. So it is 2, 6, multiply 2 each and every term. So 2 into 1, 2,
2 threes are 6, 2 twos are minus 4. Okay. Now we have one example. Suppose that uh, if x bar equals to 147 and y bar equals to 3 minus 1 2. Also we have z bar that 1 minus 1 minus 3. They ask to find x bar plus 2y bar plus z bar modulus. Okay. So first of all, we have to find 2y bar because it's a scalar multiplication with vector. Then add all three vectors and then take the modulus. So I am doing directly. You can also do this as a directly. So write down first of all x bar plus 2 into y bar and plus z bar, which is 1 minus 1 minus 3. So 147 as it is. First of all, we are doing the multiplication. 6 minus 2, 4 plus 1 minus 1 minus 3. Now add the first. So 1 plus 6 plus 1, it is 8. This and this. Middle one, 4 minus 2 minus 1, which is 1. And 7 plus 4 minus 3. 7 plus 4, it is 11. 11 minus 3, it is 10. Again, 8. Okay. Now we have to take the modulus. So x bar plus 2y bar plus z bar modulus. So it is 8 square plus 1 square plus 8 square. So if you calculate, it is 64 plus 1 plus 64, 129. Then this is called the mixture form of vector. Now we are going for the multiplication. Multiplication has two types. One is dot product and second one is cross product. For the x bar and y bar, suppose x bar equals to x1, x2, x3, y bar equals to y1, y2, y3, x bar dot y bar, it is x1, x2, x3 dot y1, y2, y3. So x1 into y1, it is x1 dot y1 plus x2 dot y2 plus x3 dot y3. So you will get a scalar number, okay, here, simple number. And it is for 2D as well as 3D. But if you go for the cross product, then it is only for the 3-dimension vector space. Okay. So x bar cross y bar equals to, we know that I, j, and k the unit forms. So x1, x2, x3.
y1, y2, y3. So I x2, x3, as we know the determinant y2, y3. So row and column we have to hide this one. Similarly, minus j, so x1, x3, y1, y3, plus k bar, x1, x2, y1, y2. Now cross multiplication and simplification. Okay. For this, we have one example, dot product as well as in cross product. For example, x bar equals to 1 minus 1, 0, and y bar equals to 1, 0, 1. For dot product, they ask to find the angles also with the help of dot product, so that x bar and y bar is given. Find angle between two product, two vectors. Okay. Also, they can write like this: find theta between x bar and y bar. So for that theta, we have one formula, that theta equals to cos inverse x bar dot y bar upon mod x mod y. Okay. So here x bar dot y bar we have to multiply. So x bar dot y bar, that 1 minus 1 0 dot 1 0 1, that 1 into 1, you can say 1 dot 1 is 1, minus 1 into 0, it's 0, minus 1 into 0 is 0. So solution is 1, dot product is 1. So अगर डॉट प्रोडक्ट लेते तो 1 आ गया, तो न्यूमरेटर मिल गया हमें ये, right? Now we have to find modulus of x bar. So mod of x bar is 1 square plus minus 1 square, 0 square. So 1 plus 1 plus 0, it is root 2. Similarly, for modulus of y, 1 square, 0 square, 1 square. It is again 1 plus 0 plus 1 root 2. So if we are putting here cos inverse x bar dot y bar mod of x bar dot mod of y bar, बराबर, तो यहाँ पे x bar dot y bar की वैल्यू आई हमारी 1, और root x bar mod x bar and mod y bar is root 2, so it is cos inverse 1 by 2. तो cos inverse 1 by 2 कब देता है? थीटा कौन से एंगल पे 1 by 2 देता है? cos 1 by 2 कब कौन से एंगल पे देता है? तो बोलते हैं 60 डिग्री पे 1 by 2 देता है. सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स cos पाई बाय 3. cos का पावर 1 है और ये -1, तो cos कैंसल हो जाएगा, रिमेनिंग इज पाई बाय 3. क्वेश्चन में आपको नहीं देंगे कि थीटा कौन सा लेना है, कॉस इनवर्स वाला लेना है या साइन इनवर्स वाला है, बट मोस्ट ऑफ द 4 मार्क क्वेश्चन दे गिव द प्रूफ दैट साइन इनवर्स, दैट क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स क्रॉस वाई, यहाँ पे देंगे आपको
मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई। तो अगर आपको बोला जाता है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स, देन यू कैन ओनली यूज द साइन। बट अगर आपको नहीं बोलते हैं कि एंगल के लिए साइन यूज करो या कॉस यूज करो, देन यू डोंट वांट टू यूज एनीथिंग, मतलब दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, साइन भी एंड कॉस भी। ओके, ओके। Suppose we have one question for that sine inverse. For example, we are taking from the practice, maybe your practice paper, which is given, or you can say, suppose we have the question that show that a bar equals to I plus 2j minus 3k and b bar equals to 2i plus j minus k. Show that theta equals to sine inverse root 35 by 84. Okay, ये हमें शो करना है. We have to prove, or you can say show, right? So for that, instead of x, I'm taking here a. Instead of y, here given b. Okay. So first of all, find out the mod of a. S- सबसे पहले क्या करना है आपको? Convert the solution into the simple coordinate form. So 1, 2, minus 3, because coordinate of I is 1, 2, and minus 3. And b bar is 2, 2, 1, minus 1. Now I'm finding the mod of a bar, which is 1 square, 2 square, minus 3 square. So 1 plus 4 plus 9, it is under root 14. And mod of b bar, which is under root 2 square plus 1 square minus 1 square.
So it is 4 plus 1 plus 1. It is 6. So this way we have the mod. Then for that next level, we have to find out the cross product I, J, K. So that for I, 1, 2, A bar, 1, 2, minus 3, and 2, 1, minus 1. So I am going to solve this. I, 2, minus 3, 1, minus 1. Minus J, 1, 2, 1, 1, minus 3, 2, minus 1. And plus K bar, 1, 2, 2, 1. I, simplification. Minus 2 plus 3 minus J bar. 1 into minus 1 is minus 1. Minus of minus 6. Okay. So I can write minus 6 as n plus 6 because we have two minus. One is for formula and 1 into 1 it is 1 minus 4. So 3 minus 2 it is 1, which is only I. 6 minus 1 it is 5 plus 5 into minus 5j, so minus 5j, and 1 minus 4 it is minus 3k. So if you go for the A bar cross B bar modulus, so it is like 1 square minus 5 square minus 3 square. So it is like 1 plus 25 plus 9. So it is under root 35. So if you observe, we want 35 in numerator and 84 in denominator. So for according to the formula, theta sine inverse A cross B mod upon mod of A into mod of B. So sine inverse A cross B, it is root 35 under root 14 and under root 6. If you multiply them, then it will be sine inverse under root 35, 14 6 are 84. Hence proof. This way you can solve the find out the angle between two vectors with the help of sine as well as cos. If we have to go for the next form, which is called uh, one theorem that x bar is perpendicular y bar, then x bar dot y bar is always 0, vice versa. Okay. For example, I'm taking an example that if x bar equals to 1, 2, minus 3, y bar equals to 4m 1, then find value of m when x bar perpendicular y bar to each other, or you can say when x bar and y bar are perpendicular to each other. Okay, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे. So that x bar and y bar is given, both are perpendicular to each other, then x bar dot y bar may be 0 according to our theorem, this statement. So 1, 2, minus 3 dot 4m1 will be 0. See here now, not I am not doing the equality.
I'm showing the arrow sign. Okay. Don't use double equal. 4 ones are 4 plus 2 into m, it is 2m minus 3 into 1, it is minus 3 equals to 0. So 4 minus 3, it is 1 equals to 0. So 2m equals to minus 1, m equals to minus 1 by 2. This is the value of m. Now we are going for the next topic, which is called unit perpendicular vector. Unit perpendicular vector. For this unit perpendicular vector question, we have one x bar, which is called, suppose I'm taking the directly example that 1, 3, 2, and y bar, which is 3, minus 1, 1. For the unit perpendicular vector, we have two formula. If we have only one vector and they ask to find the unit perpendicular vector, which is called p hat, we have formula that x bar plus or minus x bar mod of x bar. If we have two vectors like this, x bar and y bar, so we have first of all find out the x bar cross y bar, mod of x bar cross y bar, which is with the sign of plus or minus. So here we have one example that if x bar and y bar is given, find unit perpendicular vector for x bar cross x bar minus y bar. Means we have to find out the p hat between x bar plus y bar and x bar minus y bar. So first of all, find out the addition of x bar and y bar. So 1, 3, 2 plus 3 minus 1, 1. Addition 1 plus 3. First with first, 4. 3 minus 1, it is 2. And 2 plus 1, it is 3. X bar minus y bar. 1, 3, 2 minus 3 minus 1, 1. So 1 minus 3, it is minus 2. 3 minus minus plus 1, it is 4. And 2 plus 1, it is 2 minus 1, it is 1. We got both the vectors, x bar and y bar. Then p hat, we have formula that plus or minus x bar plus y bar cross x bar minus y bar divided by mod of x bar plus y bar cross x bar minus y bar mod.
So first of all, cross product of x bar plus y bar cross x bar minus y bar, I, j, k. What is your x bar plus y bar? Here it is 4, 2, 3, and x bar minus y bar it is minus 2, 4, 1. So we have to simplify that. So for I, 2 ones are 2 minus 4 threes are 12. For j bar, 4 ones are 4 minus minus plus 6. And plus k bar, 4 fours are 16 minus minus plus 4. 2 minus 12, it is minus 10 I bar. 6 plus 4 minus 10 j bar and 16 plus 4 plus 20 k bar. Now we have to find out the modulus of x plus y cross x minus y. So minus 10 square minus 10 square plus 20 square. 100 plus 100 plus 400. It is 6. So 10 root 6. So put into the formula that P hat equals to plus or minus. What is the cross product? It is minus 10 comma minus 10 comma 20 upon 10 root 6. If you simplify more, then you can take the 10 common and solve. Okay. Then we have two applications of vector. One is work done by force, and second one is moment of force. Work done by force is denoted by W and formula is F into D. Moment of force is explained by M bar, which is AB cross F bar. This is the application of dot product and this is the application of cross product. So directly we are going for the example. If force force is acting on the particle, forces are like F1 equals to suppose 1, 2, 1, F2 equals to 3, 4, 5,
and F3 equals to 1, 1, 0, acting on a particle A that 3, 1, 1, and particle moves from A to B, which is minus 2, 1, 1, then find out work done. So first of all, find out the total force, that F1 plus F2 plus F3. So if you do the addition of all the forces, it is 1, 2, 1 plus 3, 4, 5 plus 1, 1, 0. Add them. 1 plus 3 plus 1, it is 5. 2 plus 4, it is 6 plus 1, 7. And 5 plus 1, it is 6. Total force. Then for D bar displacement, B bar minus A bar, positive difference. So minus 2, 1, 1 minus 3, 1, 1. So minus 2 minus 3, it is minus 6, 0, 0. Okay. So for the W, F into D, what is your F? 5, 7, 6 dot minus 6, 0, 0. So 6 5s are minus 30 plus 0 plus 0. So your answer is minus 30 unit. But we know that work done is always positive, but the direction may be negative. So according to your calculation, question and calculation are correct. But if your answer is negative, then your direction should be negative. Okay. So don't, आपको इसको घबराना नहीं है if you get the answer negative, but first of all उसको दोबारा चेक कर लेना कि आपका कैलकुलेशन सही है, टोटल फोर्स सही है, डिस्प्लेसमेंट सही है, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. तो आपका कैलकुलेशन सही है, तो आपका आंसर माइनस आ रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है. ओके. देन मोमेंट ऑफ फोर्स. फर्स्ट फॉर दैट, सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका लेंथ ए बी है, तो यहाँ से वो फिक्स है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन से, F1, F2, F3. ठीक है. अब ये मूव कर रहा है लाइक दिस. ओके. कुछ एंगल पे ये मूव कर रहा है. ठीक है. यहाँ से फिक्स है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, दैट फोर्स F bar 143 acting on point 3 minus 3 minus 1 1, find moment of force around 4 5 0. So means your fixed point is 450 and moving point is minus 3 minus 1 1. So first of all, find out the AB. This is your A, this is your B. So that 4 5 0 minus last point, fixed point minus moving point. Okay. So 4 minus minus 3, it is 7. 5 minus minus, it is 6 and minus 1. And total F bar, so F bar is 1 only, 143. So it is just one thing. So for that moment of force, it is AB cross F. So I, J, K. What is your AB? AB is 7, 6 minus 1. And your F bar is 143. For that solution,
That six, directly I'm going 6 threes are 18 plus 4 because we have 2 minus here. Then 7 threes are 21 plus 1 and k bar 28 minus 6. So 18 plus 4 it is 22i plus 22j, sorry, minus 22j and 22k. It is the moment of force m bar. Okay. This way we can solve the all vectors, examples, all the topics we have covered here. If they ask the magnitude of moment of force, then only you have to find out the modulus. Otherwise, आपको यहाँ तक रुकना है. Okay, magnitude बोले और modulus बोले, then only you have to find out the mod of m bar. Okay. Now we are going for the second chapter. Means according to our it is first. So determinant and matrices. Most of the students don't have any queries in this section, but we are taking the one each example from each topic. So for that basic example for determinant, suppose we in this also we have 2D means second order determinant and third order determinant, right? For that basic second order determinant is row wise elimination. Here, second order means one row, second row, first row, second row, and first column, second column. So we have two row and two columns. So that's why it is called second order. Suppose we have three rows and three columns. So that's why it is a third order. So determinant is always in a square form. Square means equal number of row and equal number of column. For that solution of determinant of A, suppose we have name A and here we have name B. So determinant of A is first with 4,
means AD minus BC. We can solve the determinant. So for three order, we have to solve by doing to the two order. So for that two order, we have to take term wise solution. So that one we are fixing here and removing first row and first column. So remaining term is 5, 6, 8, 9. For that second, we have 2 with the minus sign because all we know that plus, minus, plus, minus, plus, minus, and plus, minus, plus sign. So 2 removing first row, second column, 4, 6, 7, 9, and then plus 3, which is 4, 5, 7, 8. It's a simple simplification that 5 nines are 45 minus 48, 7, 4, 9 fours are 36, 42, and the 3. So 45 minus 48, it is minus 3. 36 minus 42, it is minus 6. And 32 minus 35, it is minus 3. So it is minus 3, 12, minus 9. So minus 9 minus 3, it is minus 12 plus 12, it is 0. Okay. Then now we are going for the application of the determinant, you can say. But first of all, we are go for the matrices. 2 by 2 and 3 by 3. Matrix type, all everybody knows about the all types of matrices. ठीक है, तो मुझे matrices की टाइप दिखाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है. बट सो मैट्रिक्स में जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो बेसिक एग्जांपल पे जाते हैं. फॉर दैट एग्जांपल 1, सपोज A is 1 2 minus 1 3 and B is 4 5 6 7. यही एग्जांपल एडिशन A plus B, सब्ट्रैक्शन A minus B, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2A plus 3B और A into B इसके ले लेते हैं. So same way we can do for the 3 dimension. So A plus B करते हैं. So for A plus B, what we have to do? First with first, and second with second. Addition 4, 5, 6, 7. For the addition, 1 plus 4, 5, 2, 2 plus 5, 7, 6 minus 1, it is 5, and 3 plus 7, it is 10. This addition. A minus B, 1, 2 minus 1, 3, minus 4, 5, 6, 7,
1 minus 4, it is minus 3. 2 minus 5, it is minus 3. Minus 1 minus it is minus 7. And 3 minus 7, it is minus 4. This way you can find out the subtraction. Scalar multiplication, addition, and subtraction form that you have to multiply that matrix by 2 and the second matrix by 3. So 2 ones are 2, minus 2, 4, 6, plus 12, 15, 18, 21. Add them now. So 12 plus 2, it is 14, 15 plus 4, it is 19, 18 minus 2 is 16, and 21 plus 6, 27. Then we have to go for the multiplication. So that multiplication A into B. फर्स्ट ऑफ ऑल रूल समझ लीजिए, रो इनटू कॉलम करना है. So whenever you go for the multiplication, take row from left and take column from right. Always. So 1 with 4. 4 बीच में आएगा प्लस 2 with 6 12. ठीक है, उसी रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट एलिमेंट इधर का 5 है. तो 5 1 जा 5 प्लस 2 7 जा 14. क्लियर? देन similarly रो सेकंड लेनी है. सो माइनस 1 into 4 it is minus 4. 3 6 जा 18. Minus 1 into 5 is minus 5 and 7 3s are 21. So 4 plus 12, it is 16. 4, 5 plus 14, it is 19. 18 minus 4, it is 14. And 21 minus 5, it is 16. So this is your multiplication form. Okay? This way you can solve the multiplication also. बहुत लोगों को multiplication 3/3 में भी डाउट होता है कि सर 3/3 एग्जाम्पल है, उस तो कैसे करेंगे. सो 1 1 minus 1 2 1 0 4 3 minus 2 ये दिया है और बोलते हैं कि फाइंड आउट ए स्क्वायर. अब ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए. ठीक है, सो मैं 3/3 का ही मल्टीप्लीकेशन करने जा रहा हूँ. सो इट डजेंट रिक्वायर, हमें दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं कि सर ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो. बस इसी में देखते समझ लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन 3/3 का कैसे करना है. ठीक है, ओके. नाउ मैंने क्या बोला था, जैसे लेफ्ट साइड से रो लेनी है, राइट साइड से कॉलम लेनी है. सो फर्स्ट विथ फर्स्ट, तो 1 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 इंटू 4 इट इज माइनस 4. ये फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हुआ. फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 1 1 प्लस 1 1 1
plus minus 3 into 3, minus 1 into 3. Now, first row, third column. So 1 into minus 1 plus 1 into 0 minus 1 minus 2, it is plus 2. ये हुआ third element complete. So first row, first column, first row, second column, first row, third column. Now take the second row with first column. So 2 ones are 2 plus 2 ones are 2 plus 0 into 4 0. 2 ones are 2, second column, 1 ones are 1, 0 into 3, 0. 2 into minus 1, it is minus 2. 1 into 0 is 0. And 0 into minus 1 is 0. Now take the third row, first column. 4 ones are 4. Plus 2 threes are 6. This and this. And 2 fours are minus 8. Similarly, same row, second column. 4 ones are 4. 3 ones are 3. Minus 2 threes are 6. 4 ones are minus 4, 3 ones are 0, 3 into 0, 0, minus 2 into minus 2, it is plus 4. So now simplification करते हैं. 2 plus 1, 3 minus 4, it is minus 1. 1 plus 1, 2 minus 3, it is minus 1. 2 minus 1, it is 1. 2 plus 2, it is 4. 2 plus 1, it is 3. Minus 2. 4 plus 6, it is 10. Minus 8, it is 2. 4 plus 2 is 7. Minus 6, it is 1. And it is 0. So this is called AB. कोई फाइंड एक्स वाला हार्ड नहीं है. एक्स 1 3 4 इक्वल्स टू 0 डिटर्मिनेंट में दिया है. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 4x इक्वल्स टू 3. सो x इक्वल्स टू माइनस 3 है, वो माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा. सो इट इज 3/4. बस हो गया ये. कोई हार्ड नहीं है एक्स फाइंड करने वाला. सिमिलरली डिटरमिनेंट में ऐसे ही सॉल्व करना है. आपको डिटरमिनेंट के सामने दिया होगा 0. सो मल्टीप्लीकेशन इज ओवर. a into a मीन्स a स्क्वायर. ठीक है. कभी कभी ऐसा देते हैं कि a इक्वल्स टू 1 2 1 3 4 0 which order is 2 row 3 column. b equals to 4 1 0 1 minus 1 1. Then find 2x plus a plus b equals to 0. तो यहाँ पे मैट्रिक्स x फाइंड करना है. फाइंड मैट्रिक्स x. ठीक है. हमें x दिया नहीं है, हमें x फाइंड करना है. ठीक है. तो इसी इक्वेशन में रख देते हैं. a क्या है? 1 2 1 3 4 0 प्लस 4 1 0 1 minus 2 1. Okay. So 2x plus, add them. 4 plus 1 it is 5, 2 plus 1 it is 3, 1 plus 0 it is 1, 3 plus 1 it is 4, 4 minus 2, 4 minus 2. Okay, it is 2, 1, 0 plus 1 it is 1 equals to 0. Now this matrix will go, सामने चला जाएगा. So ये हो जाएगा 5 3 1 4 2 1. ये रहेगा. ओके. बट यहाँ पे आएगा नेगेटिव क्योंकि मैं यहाँ पे पॉजिटिव था. नाउ x विल बी, हमें सिर्फ x चाहिए तो x विल बी माइनस ऑफ 1/2 ऐसे आएगा. 5
3 1 4 2 1। अब देखो आपको मैट्रिक्स एक्स पूछा है तो 1/2 माइनस वाले को अंदर लेके जाना पड़ेगा। सो इट इज -5/2, इट इज -3/2, इट इज -1/2, -1/2। अब 2/2 इट इज -1 एंड 4/2 इट इज -2। ऐसे एक्स निकलेगा। डन। क्लियर। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, दिस वे यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर्म ऑल्सो। नाउ एक एग्जांपल है, कमेंट में आ रहा है, मैसेज में भी आ रहा है दैट a इक्वल्स टू 3 - 2 4 7 दिया है आपको। फाइंड आउट और फाइंड द वैल्यू दैट a² -8a प्लस 7i। अब यहाँ पे i इज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो a² निकालना है तो a² मीन्स a इंटू a। 3 - 2 4 7, 3 - 2 4 7। So row into column, 3 3s are 9 plus -8. So you can directly write -8. 3 2s are -6 -14. Row into column, 4 3s are 12 plus 28. And 4 2s are -8 plus 49. So इसको solve करते हैं. So it will be 1 -20 plus 4040 and 41। ये आ रहा है a²। अब -8a की बात करें सो यहाँ पे a² -8a प्लस 7i डायरेक्ट रखते हैं। सो a² इज 1 -20 4040 एंड 41 है। -8a, 8 को a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 - 2 4 7। और 7i को 7i मतलब 1001। सो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 24 16 32 56 plus 7007। So subtraction 1 minus 24, it's 23 minus 23 plus 7, it is -16, -20 minus plus 16, it is -4, 40 minus 32, it is 8, and 41 minus 56, it is 15 minus 15 plus 7, it is -8। This is your simplification। निखिल, क्वेश्चन 3 का डी के लिए आप एक बार वेक्टर फॉर्मुलेशन देख लीजिए। पहले तो स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, ऐड करो एंड देन कंपेयर करो, ठीक है।
ये ऑलरेडी हमारे आपके ट्यूटोरियल बुक का फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर में है. This way also they can ask in the exam. Now we are going for the adjoint, cofactor and minor. For that adjoint, first of all, find out the minor, then cofactor matrix, and then adjoint. Okay. For that adjoint, first of all, we need to find out the cofactors. So, 2 marks में example पूछते हैं that 316 minus 120 459 is given. Find cofactor of 0. तो 0 जिस प्लेस पर है हम जानते हैं हर एक प्लेस का साइन है. ओके. तो 0 वाले प्लेस का साइन है नेगेटिव. सो नेगेटिव बाहर रखो और उस रो एंड कॉलम को हटा दो. तो रो एंड कॉलम को हटा दिया तो बचा कौन? 3 1 4 5. सो माइनस ऑफ 5 3 जा 15 minus 4 1 जा 4. So minus 15, 15 minus 4 it is 11. So answer is minus 11. ओके. कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं हर एक प्लेस के. Okay, this way we can find out the cofactor. अब हम जा रहे हैं एडजॉइंट पे. तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 minus 1 3 4 5 6 7 8. ओके. बोला है कि एडजॉइंट निकालना है. फाइंड आउट द एडजॉइंट ए. ओके. तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक शॉर्टकट को फैक्टर मैट्रिक्स. को फैक्टर मैट्रिक्स के लिए एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग. जितने नंबर्स है उतने प्लेसेस बनाएंगे, उतने ब्लॉक्स बनाएंगे. ओके. अब ये फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट रो एंड कॉलम को गायब करो. तो बचा कौन? 4 5 7 8. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को गायब करो. 3 5 6 8. देन 3 4 6 7. राइट. देन सेकेंड रो, इस रो एंड कॉलम को गायब करो. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो 2 1 7 8 1 1 6 8 1 2 6 7. Then last row, first column. So 2 1 4 5 1 1 3 5 and 1 2 3 4. अब इसका प्लेस का साइन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ये है हमारा काजू कतरी फॉर्म. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. सो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ. 4 8 जा 7 5 जा. सो 32 minus 35. 24 minus 30. 21 minus 24. फिर 16 minus 7 minus minus plus 7. 8 minus minus plus 6. 7 minus 12. 10 plus 4 minus minus plus 4. 5 plus minus minus plus 3 and 4 minus 6. We have plus minus plus
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस काजू कतरी फॉर्म। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। और सो 32 माइनस 35 इज -3, और ऊपर जो साइन दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो प्लस माइनस इट इज प्लस। 24 माइनस 30 इट इज -6, -6 इंटू ऊपर वाला साइन विच इज +6। 21 माइनस 24 इट इज -3। 16 plus 7 it is 23। 23 into minus it is -23। 8 plus 6 it is 14। 7 minus 12 it is -5। ऊपर वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो इस वाले माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा +5। 10 plus 4 it is 14। 5 plus 3 it is -8 बिकॉज ये माइनस का साइन है इधर। और 4 minus 6 it is -2। ओके, ये आया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब लास्ट है, अपने को एडजॉइंट निकालना है एडीजे ऑफ ए। तो हमें लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स आया उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। बस रो का कॉलम बना दो। सो -3 6 -3 -23 14 5 एंड 14 -8 -2। ये हो जाएगा ट्रांसपोज। सब होगा स्टेप बाय स्टेप। मैट्रिक्स मेथड भी आएगा, क्रैमर्स भी कराऊंगा। ये एडजॉइन देख लो, यही एडजॉइन आपको इनवर्स में भी फाइंड करना है। अगर बोला जाता है कि ए 3/3 देते हैं, ठीक है, और फाइंड द इनवर्स, सो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट, फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर द इनवर्स, देन फाइंड दिस प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस के बाद निकालना है। कब, जब इनवर्स में पूछा जाए तब। ओके, इतना क्लियर हो गया। हाँ, ट्रांसपोज नहीं करोगे तो आपको एडजॉइन करेक्ट नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज एट द लास्ट स्टेज। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द एप्लीकेशन। इनवर्स तो समझ गए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स के लिए हमें डिटरमिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइन निकालना। बट 2/2 का एडजॉइन कैसे करते हैं। ओके, अगर आपको दिया है 2 3 1 4, सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा, ये दोनों का इंटरचेंज करना है। ठीक है, 4 2, और इन दोनों की साइन चेंज करना है। सो -3 -1, ये होता है 2/2 का एडजॉइंट। ओके, अब इनवर्स के लिए भी सेम चीज है बेटा। आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट एंड देन एडजॉइंट। सो डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 2 3 1 4। 3/3 का 3/3 डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड करोगे। ठीक है, so 4 2 जा 8 -3 इट इज 5। तो अगर 5 आया मतलब ये नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एडजॉइन आप निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, ये एडजॉइन मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 1/5 इसमें रख दो। सो इनवर्स कैसे होगा, 1/5 इंटू 4 -3 -1 2, ऐसे। ठीक है,
Now we are going for the application. Cramer's rule and matrix method. Now for this, both the method, Cramer's and matrix, we have the equation form. Suppose that 3x plus 4y equals to 1 and x minus y equals to minus 2. Similarly, same example I'm taking for the matrix method. Okay. For the Cramer's, we have to find out the determinants. So for the that determinants, we need that three determinants, that d, dx and dy. अब d कैसे निकालोगे? Coefficients of the x and y. 3 4 1 minus 1. चलो सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री, माइनस फोर इट इज माइनस सेवन. ओके. अब dx के लिए क्या करना है, हम x वाले कोफिशिएंट को निकाल के हमें कांस्टेंट यूज करना है. सो 1 माइनस टू, 4 माइनस वन. सिंप्लीफाई करो, माइनस वन, 4 टू प्लस एट, इट इज सेवन. और dy, अब y के कांस्टेंट को निकालो. ठीक है, उसकी जगह पे कांस्टेंट डालो. 1 माइनस टू, 3 टू माइनस सिक्स, माइनस वन, इट इज माइनस सेवन. ठीक है. तो अब x का वैल्यू क्या है, dx अपॉन d. सो dx इज व्हाट, 7 अपॉन माइनस सेवन, इट इज माइनस वन. ठीक है. एंड y का वैल्यू है dy अपॉन d. सो dy इट इज माइनस सेवन, माइनस सेवन, इट इज वन. तो हमारा x आया वन और y आया माइनस सेवन. जब बोलते हैं क्रैमर्स रूल से यूज करना है, सॉल्व करना है, तो आपको इसी मेथड से करना है, दिस वन. अगर आपको बोला जाता है और अगर मैट्रिक्स मेथड से करना है, नाउ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, तो लेफ्ट साइड से के जो कोफिशिएंट है उसको मैट्रिक्स में लाओ. सो थ्री, फोर, वन, माइनस वन. एक्स मैट्रिक्स है हमारा एक्स एंड वाई, कॉलम मैट्रिक्स. और वाई मैट्रिक्स, सॉरी, हमारा बी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, विच इज वन एंड माइनस टू. फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. सो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा. सो फॉर ए इनवर्स हमारे पास है फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए. फॉर दैट डिटर्मिनेंट ए, थ्री, वन, फोर, माइनस वन. सो हमारा माइनस थ्री माइनस फोर आएगा, इट इज माइनस सेवन, डिटर्मिनेंट आया. अब एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए हमें प्लेस चेंज करनी पड़ेगी डायगोनल की, और साइन चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, ये आया हमारा एडजॉइंट. सो फॉर इनवर्स इट इज वन अपॉन माइनस सेवन इंटू माइनस वन माइनस फोर माइनस वन थ्री. ठीक है, ये हो गया इनवर्स. हमें चाहिए एक्स, ए इनवर्स बी. चलो, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, वन अपॉन सेवन नेगेटिव वाला, माइनस वन माइनस फोर माइनस वन थ्री. अब हमारे पास बी क्या था, हमने बी देखा ऊपर, तो वन माइनस टू मैट्रिक्स है, तो वन माइनस टू. अब माइनस वन अपॉन सेवन एज इट इज रखते हैं. ठीक है. सो मल्टीप्लाई करो रो इंटू कॉलम. सो माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस फोर इंटू प्लस माइनस टू मीन्स प्लस एट, माइनस वन इंटू वन इट इज माइनस वन, थ्री टू जा माइनस सिक्स. सिंप्लीफाई करते हैं. सो माइनस वन बाय सेवन इंटू एट माइनस वन इट सेवन, इट इज माइनस सेवन. अब माइनस वन बाय सेवन को अंदर लेके जाओ, तो ये सेवन बाय माइनस सेवन एंड माइनस सेवन बाय माइनस सेवन. तो सेवन बाय माइनस सेवन इट इज माइनस वन एंड माइनस सेवन बाय वन. और हमारा जो x है वो x खुद मैट्रिक्स x और y ही है. तो हमारा x क्या आया, माइनस वन, एंड y क्या आया, वन.
डन। ये तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे आया था +1। बोथ आर सेम। ठीक है। So this way you can find out the matrix application by Kramer as well as matrix method. पार्ट टू मार्क्स वाला कोफैक्टर मैट्रिक्स वाला मैंने समझा दिया आगे ही, कि जब आपको 2 मार्क्स में कोफैक्टर पूछते हैं, आपको बोला गया है मैट्रिक्स, ध्यान से आप सुनते नहीं हो, 1 2 1 4 5 6 7 8 9, अगर ये एग्जांपल है और बोला है कोफैक्टर फाइंड करना है 6 का, रो एंड कॉलम हटा दो, बचा कौन, 1 -1 2 7 8। ओके। और इस 6 का सिंबल क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। 1 8 ज़ा 8 -7 2 ज़ा 14। सो 8 - 14 इट इज -6, और बाहर माइनस है, वो आ जाएगा +6। ऐसे पूछते कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, डन। I hope so all the topics are covered by here. ठीक है। सो कोई डाउट हो तो यू कैन सॉल्व द फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर एज वेल एज क्वेश्चन बैंक जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर आपको दिया है, दोनों सेट पेपर, दोनों पेपर सेट सॉल्व कर दो, इजी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।